Welcome aspirants, welcome to SRIRAM IAS YT channel on this one PYQ a day series. Today is the day of geography and that is why I'm here to talk about a previous year question which has appeared in GS paper 1 mains 2021. Let's start with our question which was a 10 marker for 150 words. A straightforward question which is despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contributes much less to its GDP in percentage. Discuss. So this question is coming from primary activities, that is mining activities, which is directly linked with Indian geography, resource distribution, where Indian resources, natural resources are located. So India is very rich in terms of mining deposits, be it coal, be it iron ore, bauxite, etc. Despite the fact that India was one of the constituent of the prehistorical Gondwana land, other parts of the prehistorical Gondwana land, be it, for example, Australia, they are very good at mining industry. The mining industry contributes substantially to their national GDP, but that is not the case with Indian economy. So ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो इस माइनिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल को अटेन करने नहीं दे रहे हैं, उससे हमें करना है डिस्कस. This is being established in the first few lines of the question. This has been stated. So either let's start with our answer writing. Obviously, if you have the time to think, obviously you will have to go with an introduction, body and conclusion format. So in case of introduction, depending on your writing style, you can start with a quote. As I always say, you can start with a fact. You can also start by explaining the context of the question itself. So here you will talk about how mining industry is roughly around 2% of India's GDP, despite the fact that India is very rich in mineral resources, mineral reserves. So you explained the definitive statement which the examiner has given you. Usko humne explain kar diya. You can also talk about the presence of the minerals. You can start with how many minerals are present. Introduction में हमें और भी अगर innovation लाना है, we can bring that innovation. That is also a possibility. It all depends on your answer writing style. Introduction इसमें बहुत ही simple बनेगा. अब हम आते हैं अपने body के part पे. Now discuss why this is the case. What is established? That we are rich in mineral resources because we were part of what? Gondwana land. But despite of the fact that we are rich in mineral resources, हमारा जो contribution है mining industry का काफी कम है. तो क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो कारण होगा वो regulatory होगा. यहाँ पे regulatory reasons है because of which we are not capable of generating lot of revenue from this industry. The contribution to GDP is very less. Ideally, it should be roughly around 8 to 10%, but it is hovering around 2% because of the regulatory issues that we are facing. Forest clearances नहीं आते, environmental impact assessment की बहुत ही strict guidelines हैं, government की जो policies हैं, जो उनकी approach है towards the mining sector is still very outdated. It is very obsolete. It is socialist era idea जहाँ कुछ PSUs हैं वो डोमिनेट करते हैं. जैसे कोल इंडिया डोमिनेट करता है कोल सेक्टर को. तो जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है, जो पॉलिसीज हैं वो ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड हैं इन अ वे व्हिच डज नॉट जस्टिफाई द नीड ऑफ ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. फ्रेगमेंटेशन है. सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन समटाइम्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट गवर्नमेंट. जुडिशियल एक्टिविज्म भी कई बार इंटेंस होता है. ये सारे रीजंस हैं जो कि बनाते हैं हमारे इस इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्मिंग. इसके अलावा you have reasons like geological reasons. Geological reasons are also very important. Many of the minerals are very hard to extract. Just look at what is happening with the lithium. So lithium, it was announced with a lot of fanfare. Lithium has been found in Jammu and Kashmir, Raisi district. What is happening there? So there are many such minerals deposits in the country, which is the presence is there, but sometimes the quality is not good. For example, in case of coal, we have to import a lot of
coking coal from outside, particularly from Australia. And many a times जो concentration होता है जैसे रेयर अर्थ का फॉर एग्जांपल, वो काफी फ्रेगमेंटेड होता है. तो क्वालिटी का भी इशू है. जो नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, वो हमारे पास नहीं होती, उनमें अडॉप्टेशन नहीं हो पाता, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है काफी लो होता है. तो ये सारे फैक्टर्स मिलके brings the underperforming of this particular industry. Then you will talk about the logistics sector also. This is also a serious lacuna. Availability and the presence of roadways, proper expressways, highways, रेलवेज कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी. इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट आज भी 10% ऑफ द जीडीपी है. तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे साथ लॉजिस्टिक्स के साथ. मेनी टाइम्स जिन इंडस्ट्रीज को डिमांड है वो वेस्टर्न कोस्ट में है और जो माइनिंग हो रही है वो ईस्टर्न कोस्ट में हो रही है. तो जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इन दोनों सेंडर और रिसीवर को इंटीग्रेट नहीं कर पाता एट एन अफोर्डेबल मैनर. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ लॉजिस्टिक के साथ बना हुआ है. Then you have socio-cultural issue also. Many of these minerals, they are located into the tribal belt in the heavily forested areas of central and eastern India, be it Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Telangana, parts of Telangana, parts of Andhra Pradesh. So most of these areas are tribal dominated forested areas where the natural response to the mining activity would be mass displacement, many times insurgency also, जैसे नक्सलिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, करप्शन के इश्यूज होते हैं. ये सारे इश्यूज हैं जो कि माइनिंग के साथ जुड़े हुए. दैट इज व्हाई ये अंडर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री करती है. देन यू हैव इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो. एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, soil pollution, water pollution. All of these types, they are very detrimental to the living standards of the people. They bring substantial damage to the vulnerable population, be it children, pregnant women, lactating women, elderlies, sick people. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेट्स के पास, टू हैंडल इट प्रॉपरली. तो मोस्टली जो फैक्टर्स बनते हैं माइनिंग इंडस्ट्री के साथ वो ये बनते हैं. दैट इज व्हाई वी अंडर परफॉर्म. Now, the question may come to your mind, why this is a question which is listed in geography. This is definitely geography. So, economic geography, social geography, cultural geography is fused with physical geography. Physical geography will talk about कि ये mineral resources कहाँ पे located है और क्यों located है. बाकी जो factors हैं वो भी बनेंगे. You can talk about location factors also. अब लेबर की अवेलेबिलिटी कई बार नहीं होती, स्किल्ड लेबर की इंडिया में हमेशा से शॉर्टेज रही है. ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के पास. इलेक्ट्रिसिटी काफी इसमें एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है, तो वो भी रिलायबल इंडिया में नहीं होती, कई बार कई जगहों पे नहीं होती, बिकॉज ऑफ विच ये सारे इश्यूज होते हैं. कैपिटल की प्रॉब्लम होती है माइनिंग इंडस्ट्रीज को, दैट दे नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू कीप एक्सप्लोरिंग the regions. So all of these factors, you can also talk about here the location factors issues in a way which will tell you why this sector is underperforming. Remember, you can write a full-fledged essay on this topic, but the examiner is deliberately asking to write on 150 words. So by the time you are finished with introduction, 2 or 3 lines, and the body part, the key headlines, and supported by the substantiation part, that is examples, etc., you will be down to the line 130-140 words will be there. 150 वर्ड्स का आंसर 1.5 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि जनरली एक एस्पिरेंट 7 से 8 वर्ड लिखता है एक लाइन के अंदर, तो दैट इज डूएबल. 1.5 पेजेस मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए. नाउ यू विल राइट द कंक्लूजन. व्हाट विल बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन शुड रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू इन टोटलिटी. दैट इज द मोटो ऑफ द कंक्लूजन राइटिंग. If the introduction is the face of your answer, this conclusion part is simply the general impression that you will create inside the mind of the examiner about your understanding of the issue. तो कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि भाई इंडिया में अगर हम देखें अवेलेबिलिटी जो है मिनरल्स की, क्योंकि इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, इट इज क्वाइट गुड, क्वाइट ह्यूज,
But our problem lies in structural issues, environmental issues, labor issues, investment issues, policy issues. तो यहाँ पे हमारे साथ इशू जो प्रॉब्लम है, कोर प्रॉब्लम ये है कि वी आर, despite the fact the availability of the minerals are quite good on the Indian region, Indian country, we are facing the underperformance of this mining industry, particularly because of these lacunas. तो आगे अगर इस तरह से अगर वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन ऑल वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव स्पेंट ऑलरेडी ऑन द क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन ए डिफरेंट वे. कंक्लूजन में हम बात कर सकते हैं कि दिस इंडस्ट्री नीड्स सस्टेन्ड रिफॉर्म्स टू टेक इट टू द लेवल वेयर द अदर गोंडवाना लैंड कंट्रीज आर. इस तरीके से भी हम कंक्लूजन को लिख सकते हैं. तो कंक्लूजन शुड बी समथिंग विच रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू विथ ए फ्यूचरिस्टिक टिल्ट. दैट्स ऑल. बाकी rest is to your imagination, your innovation, how creative you can be. That's all in this particular question. I hope all of you got the gist. You can also join me on my Telegram to remain in touch. Thank you for giving me your time.